So today we are going to learn about the Mesopotamian civilization. And one thing you all know that this is only for class 6 of ICSE board. I am officially studying by this of class 6 ICSE board. So let us start this chapter. First, civilization. During the Neolithic age, people began to live and work together in groups. This gradually led to the birth of the earliest society. As society progressed, life became more comfortable than ever before. Due to the advanced techniques of farming, people were able to produce more than they could consume. Besides, they acquired the knowledge of different crafts and developed new skills. Simultaneously, discovery of copper and bronze further added to the pace of human progress. Food production and metal technology introduced some complexities into the lifestyle of our ancestors. Search of raw materials and exchange of goods between farmer and artisan led to develop of trade. Eventually, the traders and craftsmen were required to live close to each other. The need to live together required early peoples to move into large well-organized groups, which formed towns. This well-organized group usually had clearly defined boundaries and local administrative mechanisms. These groups were larger than villages and shared culture traditions such as language, arts, and architecture. This led to the rise of towns and city. मैं पहले इसे इंग्लिश में पूरा पढ़ूंगा, फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा. This led to the rise of the towns and city. The beginning of the towns and city dwelling is regarded as the start of urbanization. All this human development led to the birth of earliest human civilization. The word civilization is derived from the Latin word civis, civis, which means citizen or dweller of a city. Civilization essentially means a complex system of social advancement characterized by a reasonably organized life, a system of governance, law, and a progress in the science and art. The world has seen the rise and falls of many civilizations. Most of these civilizations emerged in the Bronze Age on the banks of the river. Bronze Age civilization. Bronze Age civilization or the river settlements means the Bronze Age civilization were also called the settlements which are based upon the rivers. The Bronze Age was a period in the evolution of material culture when people made tools from bronze. Four great civilizations emerged. This bronze is only the bronze when you came third ranking in anything of your school and then you get the bronze medal. This is that bronze only. Bronze Age. The Mesopotamian civilization between the river Euphrates and Tigris. The Indus Valley civilization in Indian subcontinent along the banks of the river Indus. The Egyptian civilization in the Nile Valley and the Chinese civilization in the valleys of the rivers Huanghe and Yangtze Kiang. All these civilizations developed in river valleys for many reasons. Abundant water. River ensured abundant water supply which could be easily used by the entire settlements. Fertile lands. The river banks had fertile soil which facilitated the growth of crops. Hunting. Crops मतलब फसल. Hunting was no longer essential. This gave a lot of free time to explore other occupation and innovation. Means of transport. As human began inventing barter and trade start increasing. This led to an increase in travel and rivers allowed people to cover long distance quickly. It was due to the reason
of the river valley civilization flourished for a long period of time. One such civilization was the Mesopotamian civilization. तो अब हम लोग अपने टॉपिक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आ गए हैं. मीन्स द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. द Mesopotamian civilization in the Bronze Age civilization is a Bronze Age civilization. Means the Mesopotamian civilization is also a Bronze Age civilization, not the Iron Age, that emerged in the wide and fertile land between the rivers Tigris and Euphrates in West Asia. In Greek, the term Mesopotamia literally means the land between the two rivers. The southern part of this river was also called Sumer. To its north lay Akkad and Babylon. The uplands in the north were called Assyria, today which we call it as Syria. Presently this region corresponds the most of the Iraq and part of the Syria and Turkey. The Mesopotamian civilization flourished from 3500 BCE and the Mesopotamian flourished from 3500 BCE to 600 BCE. During floods मतलब बाढ़ के समय, the twin rivers overflowed their banks and deposit alluvial slit, making the soil fertile and hence allowing the people to grow crops and settle down in the region. Eventually, Mesopotamia had no natural boundaries like mountain, desert or sea, protecting it. Hence, its fertile area attacked several nomadic tribes from outside the region. The earliest tribe to settle in the Sumer were known as Sumerians. The Sumerians developed the world's first civilization and founded the oldest of the Mesopotamian city-states around the year 3500 BC and prospered for more than 1500 years. They were later conquered by the Babylonians and eventually by the Assyrians. Thus, the Great Mesopotamian civilization was a combination of three key civilizations: Sumerians, Babylonians, and Assyrians. Main features of the Mesopotamian civilization: the Sumerian city of the Mesopotamia was excavated by Sir Leonard Woolley in 1922. This discovery provided insight into two ways of life in Mesopotamia. Town planning. The life of UR was divided into three main areas: the scarce city, the walled city, and the outer town. The scarce area consists of the massive step pyramid called the ziggurat. The ziggurat name spelling is ZIGGUART. I am repeating, ZIGGUART. Was the chief temple and the principal god of the city. There were other small cities for the other gods scattered through the city. Architecture. The Mesopotamians constructed the world's first city. Social structure. Like most civilizations, Mesopotamia has a hierarchical society. The society was broadly classified into the upper class, middle class, and the lower class. Upper class consists of the French third estate. You will not learn about the French Revolution. Only in 8th class when you come, then you study about the French Revolution. So, upper class is nobility, middle class is citizen, lower class is slaves. Family life. The Mesopotamian families followed the norms of the patriarchal society. Occupation. The occupations of the Mesopotamians include agriculture, animal husbandry, and art and the craft. However, agriculture remained the core occupation. Now come to another topic, that is trade and commerce. Surplus agriculture produce led to the rise in trade and commerce between cities in Mesopotamia. Region and culture. Each city in Mesopotamia has a patron god. The temple of the patron god was located at the temple in a city.
While there were smaller temples of other gods throughout the city, the forces of nature such as sun, rain, moon and star were also worshipped. Contribution to the modern world. The Mesopotamia is widely considered to be the oldest civilization known to humankind. The modern world remains indebted to varied contributions which are primarily in depth. Now come to technology and invention of wheel. Although archaeologist was not sure who invented the wheel, the oldest wheel known was discovered in Mesopotamia. It dates to 3500 BCE, means 3500. It likely that Sumer first used the wheel in making pottery in 3500 BC and then used it as a transport in around 3200 BCE. Law. The Mesopotamians was first to develop a code of law that every citizen was expected to follow. If a citizen failed to abide by the laws in his code of conduct, they were liable to face consequence. King Hammurabi of Babylonia had complied the rules and the laws of the city and written them on the stone slab. The eye of for an eye, मतलब आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ. Philosophy was written followed by Hammurabi. For example, if a man has broken another man's bones, his bones will be broken too. मतलब एक आदमी डंडा से किसी और आदमी का पैर हाथ तोड़ा तो उस आदमी का भी डंडा से हाथ पैर तोड़ा जाएगा. Decline of the civilization. By 2000 BCE, the wonderful, इसे ध्यान से सुनिएगा. By 2000 BCE, the wonderful Mesopotamian civilization started to decline. There are many factors that attribute to its fall. Some historians observe that frequent flooding and faulty irrigation techniques led to build up the mineral salt in fields over a long period of time. This made the land infertile and unsuitable for crops, forcing people to abandon the site and move elsewhere. It was also speculated that the river Euphrates changed its course, adversely affecting the Mesopotamian people. Historians can also believe that wars were an important cause for the collapse. The last Sumerian dynasty fell in 2000 BC, followed by a period of chaos and confusion. So this was the English explanation of the chapter. So let us come to the Hindi explanation of the chapter. I have explained this chapter you in English. So let us come on to the Hindi explanation of the chapter. The civilization. न्यूलिथिक पीरियड के समय मतलब नए एज के समय पीपल शुरुआत कर दिए थे रहना एक साथ ग्रुप में, और इसके कारण सबसे पहली सोसाइटीज़ का जन्म हुआ था जिसने अलग अलग टेक्निक्स और फार्मिंग मेथड्स को भी जन्म दिया था लोगों के सामने. और इसी के साथ हम एक ऐसा चैप्टर ये है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इस पूरे दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन को दर्शाता है. सबसे पहली ह्यूमन सिविलाइजेशन जो नदी पे हुई थी, यानी कि राज्य जो जिन्हें ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के भी नाम से जाना जाता था. ये अक्सर दो नदियों के बीचों बीच होती थी या फिर ये एक नदी के बगल में होती थी. तो इसमें से सबसे पहला जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ था उसका नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. तो अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ही क्योंकि इस सिविलाइजेशन ही सबसे पहला सिविलाइजेशन है. और ये क्यों सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था इसका तो कोई कारण नहीं, लेकिन ये टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के बीचों बीच है, ठीक उसी जगह पे जहाँ पे आज बगदाद का शहर है जो इराक देश में है. तो उस समय इसे मेसोपोटामिया का नाम से जाना जाता था. और आज भी बगदाद में एक ऐसा सिटी है, बगदाद के आसपास ही एक ऐसा सिटी है जिसे मेसोपोटामियन सिटी के नाम से जाना जाता है. अब
इराक को मतलब सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के होने का भी वो दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। अब ये नदियों के बगल में ही क्यों होते थे, इसका क्या कारण है? तो इसका ये कारण है कि वहाँ पे सफिशिएंट वाटर होता था और फर्टाइल सॉइल होता था और ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम होता था एक सामान को दूसरे सामान तक पहुँचाना। अब उसके बाद ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टॉपिक पे आइए। तो मेसोपोटामियन का जो लोकेशन था वो सबसे पहले ये एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन था जो वेस्ट एशिया में था और ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के ठीक बीचों बीच था। और ग्रीकों के भाषा में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को मेसोपोटामियन का मतलब होता है लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। अब इसका जो दक्षिणी इलाका था उसे सुमेर कहते थे और उसके नॉर्थ में यानी कि उत्तर में अक्कड़ नाम के लोग रहते थे। अक्कड़ सिविलाइजेशन थी, अक्कड़ साम्राज्य था। और नॉर्थ ईस्ट में बेबीलोनिया नाम का था। और जो ऊपर के सबसे ऊपरी जो प्रदेश थे उसे असीरिया कहते थे। अब आज ये जो रीजन है ये सीरिया और इराक और टर्की में ही है, इन तीनों देशों में। अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन 3500 BCE में शुरू हुआ था और अंत हो गया था इसका 600 BCE तक। अब इसके कुछ ऐसे फीचर्स भी थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को 1922 में सर लियोनार्डो वुली ने ढूंढा था। बस इसके बारे में कौन ढूंढा था, यही है टाउन प्लानिंग। अब जो वहाँ के जो टाउन्स थे वो 3 भागों में मेनली डिवाइडेड थे, जिसे जिगुआट कहते थे, वॉल्ड सिटी कहते थे और स्केट सिटी कहते थे। आर्किटेक्चर, यहाँ के आर्किटेक्चर ट्रायंगुलर शेप के हुआ करते थे। सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ 3 तरीके के कास्ट सिस्टम रहते थे, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। फैमिली लाइफ, फैमिली नॉर्मल सोसाइटी के थे, जैसे कि कुछ फार्मर्स थे, कुछ राजा के खानदान थे और कुछ मतलब पीजेंट थे और ऐसे ही कुछ थे। ऑक्यूपेशन था यहाँ का एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। अब आ जाइए आप लोग इधर, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ जो ट्रेड और कॉमर्स होता था वो मेनली क्रॉप्स का होता था। रीजन और कल्चर, जो हर एक रीजन था उसमें मेसोपोटामिया का हर एक गॉड हुआ करता था और वो सिटी के बीचों बीच हुआ करता था और नेचर के फोर्स सन, रेन, मून और स्टार को भी पूजा की जाती थी। अब राइटिंग एंड लिटरेचर, तो यहाँ का जो सबसे पुराना जो राइटिंग शुरू हुआ था सुमेरियंस लैंग्वेज में ही शुरू हुआ था। बस इसके बारे में इतनी जानकारी है, जिसे क्यूनिफॉर्म के नाम से जानते हैं, CUNEIFORM। टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट को ये तो नहीं पता कि सबसे पहला व्हील कहाँ डिस्कवर हुआ था, लेकिन उन्हें इतना ज़रूर पता है कि सबसे ओल्डेस्ट व्हील मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ही था, जिसका डेट होता है 3500 BCE 3000। अब यहाँ का कानून डेवलप किया था किंग हम्मुराबी ने। किंग हम्मुराबी बेबीलोनिया के थे जो यहाँ पे आए थे शासन चलाने। अगर यानी कि जैसे कि आँख के बदले आँख था, जैसे कि दूसरे का कोई हड्डी तोड़ देता था पैर का तो उसका भी हड्डी तोड़ दिया जाता था। अब सिविलाइजेशन का डिक्लाइन, इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन 2000 BCE तक हो गया था। और जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते गए थे। बहुत सारे फैक्टर हैं, आर्कियोलॉजिस्ट आज तक असली फैक्टर को डिफाइन नहीं कर पाए, जैसे कि फ्लडिंग, जैसे कि बार बार बाढ़ आने लगा, फॉल्ट, इरिगेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा और वॉर शुरू हो गई। तो ये था कुछ ये चैप्टर, ऐसे ही हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इसका, तो इसे पढ़ने में बहुत आसानी होता है ऐसे चैप्टर को। तो यही कुछ ऐसे चैप्टर थे जिसका अब ये चैप्टर का अंत करते हैं। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब आपका होम का टाइम है, तो अब मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।